Shaheen Afridi showed his class as he claimed his second 5-wicket haul in 4 matches. Fakhar Zaman followed that up with an onslaught. And the informed Hafiz ensured Khyber Pakhtunkhwa cantered to victory. As a result, Sindh sunk to their 3rd defeat. Today, they face a distraught Central Punjab who were edged out by Balochistan in a last ball thriller. It promises to be a fiercely fought contest as Central Punjab are desperate for a win to stay in contention for the last 4. Hello and welcome to the highlights of match 13. It was day 7 of the tournament and it was KP versus Central Punjab. Well, locking horns with each other in an all-important game. KP won the toss and they decided they're going to bat first in Multan. Let's join our commentators and enjoy the action. Action, match 13. What's it? Wide given by the umpire. This time he slogs, puts 1 foot down and gets the first boundary going of the day. It's just picked over square leg, as you see. That all you had to do, you knew the fielder being fine leg, square leg being up in the air for a good boundary at the end of the over. Down the wicket, plays it straight, but there is protection. Can he cut it off? No, he can't. That's 4. Outfield just lightning quick in Multan Cricket Stadium. Giving the charge and he will clear deep mid-wicket by a good margin. He hits it hard for Fakhar Zaman. Once he commits himself, then he goes through with the shot and he puts all the possible force behind it. Fakhar Zaman in the mood to dance. As you see, just dancing down the track, seeing the ball, hitting the ball hard, and just a nice 6 to end this over with some momentum. और इसे उठाकर खेल दिया स्क्वायर लेग बाउंड्री के आसपास कोई फील्डर नहीं था और अगर होता भी तो कुछ नहीं बिगाड़ पाता। रिजवान ने आज के दिन का अपना पहला छक्का लगाया। पिछले ओवर में भी यही शॉट ट्राई किया था उन्होंने और वो कनेक्ट नहीं कर पाए थे। इस मरतबा बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कनेक्ट किया, थोड़ा ऑफ साइड पे गए, बॉल में पेस काफ़ी था, उसको यूज़ किया। दोनों फील्डर्स जो फाइन लेग और स्क्वायर लेग के दोनों ऊपर थे। इस बार कैच आउट हो गए, गेंद को ज़मीन पर नहीं रख सके, कट करते हुए उनकी तवक्को से ज़्यादा ये अकरम की गेंद बाउंस हो गई थी। बड़ी अहम कामयाबी हासिल की सेंट्रल पंजाब ने ऑफ स्पिनर के ज़रिए। बहुत ही अहम कामयाबी और बॉल कट के लिए आइडियल था। बहुत अटैकिंग लाइन पर बॉलिंग कर रहे हैं, इसीलिए हाथ खोलने का मौका मिल गया। लगता है कि हफीज़ ने ये इनिंग्स वहीं से शुरू की है जहां कल इख्तिताम किया था। ओवर महंगा रहा लेकिन कामयाबी मिली इसमें कासिम अकरम को 49 पर 1। इस बार चार्ज किया और ये बुलंदो बाला छक्का फखर जमान का, बिल्कुल संभलने का मौका नहीं दे रहे तो नौजवान फास्ट मीडियम बॉलर को।
तो हमला बोल दिया बाहर आते हुए। जी पूरा जोर लगाया फ़खर जमान ने और देख लिया था अहमद बशीर की पेस ज़्यादा नहीं है, कदमों का इस्तेमाल किया और ये उनके फेवरेट शॉट्स में से है। हफीज़ ने इसे उठाकर खेला और मिड विकेट पर 4 रन हासिल कर लिए। एतमाद के साथ खेला गया स्ट्रोक था क्योंकि गेंद बहुत देर तक हवा में रही, लेकिन ये इलाका खाली था दूर दूर तक। And he plays spin very, very well down the ground. Oh, brilliantly done. I've seen a lot of lapses in the field, but that one was superb. Especially when the pitch is helping the bowlers. Have a look at that full dive. Well done. And there you go. The slow leg spinner does for the inform Hafiz. Usman Qadir gets a huge wicket. Hafiz out, stumped. Usman Qadir strikes, and it wasn't the same pitch Hafiz has been playing on. Really, really well bowled. Just fraction change of length, and it did spin as expected. He was way down, no chance for him to go back. The big man, the powerhouse. Sure he does. Same result, brings up his 50 with 2 maximums. Change in gears from Fakhar, 2 and 2. That was a brilliant strike. He's targeting Bilal Asif, knows his strength. Look at that, high back left, long levers. Launched it over mid, long gone boundary for another maximum. इस बार ऑन साइड में खेला, फील्डर हैं और कैच पकड़ लिया उस्मान कादिर ने। एक मौके पर लगा था, शायद सूरज उनकी आंखों में आ रहा है, लेकिन गेंद को निकलने नहीं दिया अपनी हथेलियों से। बड़ी अहम कामयाबी ये जफर गौहर ने दिला दी सेंट्रल पंजाब को। बहुत बड़ा खतरा बनकर मुंडला रहे थे बॉलिंग लाइनअप पर फखर जमान। बॉल बहुत पीछे गिरा हुआ था और फ़खर जमान इसको बाउंड्री से पार नहीं फेंक सके और एक ज़बरदस्त कैच। इन्हें ये ग्राउंड की मशरकी तरफ फील्डिंग करनी है और इस बार सामने की तरफ हिट लगा दी। पहली गेंद पर आसिफ अफरीदी ने छक्का लगाया। हाँ, क्योंकि पिछली टांग क्रीज के अंदर थी। और एक और बड़ा शॉट खेल दिया, क्लियर कर जाएंगे उस्मान कादिर को। ये बहुत बड़ा छक्का लगाया। और बोल्ड कर दिया इनसाइड एज और गेंद ने स्टंप्स को निशाना बनाया। इस तरह हिसाब बराबर कर दिया इस ओवर में लगने वाली बाउंड्री का अहमद बशीर ने। तो डेंजर मैन आसिफ को आउट किया, जिन्होंने सिर्फ 6 गेंदों में 20 रन बनाए। फुल टॉस, गेंद गैप में जा रही है। लॉन्ग ऑफ के फील्डर नहीं कट ऑफ कर सकेंगे। दौड़े जरूर थे कासिम अकरम, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिल सका। और बोल्ड कर दिया इनसाइड एज और गेंद ने स्टंप्स को निशाना बनाया। इस तरह हिसाब बराबर कर दिया इस ओवर में लगने वाली बाउंड्री का अहमद बशीर ने। तो डेंजर मैन आसिफ को आउट किया, जिन्होंने सिर्फ 6 गेंदों में 20 रन बनाए। लेंथ बॉल था। Wrong line when you got fine leg up in the circle. Wrong line. You can tell your captain that you want that field a little wider, but that was the wrong line. Edge, and is that taken? Yes, well done. Just one-handed. Kamran Akmal. That's the end of Iftikhar. It was a little wide, got a thick edge, held the edge to it. Kamran did well, the timing was right. Yes, cat-like reflexes by Kamran Akmal. Was not expecting that, just took his hand out, but nicely watched and just grabbed it with one hand. And he's gone. That should be out. Trying to scoop that and gets a bit of glove and handle.
And easily taken by Kamran Akmal. Yes, Wahab Riaz was feeling very ambitious, trying to play it over fine leg, but just a slow ball by Ahmed Bashir, and the ball just popped up for an easy catch. Full toss high in the air and should be taken. Yes, it is. That's the end of Zohaib Khan, but brings Shoaib Malik on strike. Another try for a Yorker with full toss and went straight up in the air. First ball for Zohaib Khan. Came in, tried to hit it for a maximum first ball, but just popped it up in the air, making Ahmed Bashir on a hat trick. Pulled away, and will it earn him a boundary? Yes, so finally we see something crossing the rope. A boundary to end the innings, and it is 178 what KP have managed to put up on board after 20 overs. Well, at the end of the first innings, 178 for 7 is what KP managed with Fakhr Zaman's 66 of 42. It seemed like it was not as easy to bat on like we've seen in the previous days. They only managed 36 runs in the last 5 overs. It was Shoaib Malik who batted till the end, not out, 27 of 24. Having a look at the bowling, and some credit to be given to the Central Punjab bowlers who slowed them down in the end. 3 wickets for the new bowler Ahmed Bashir was included in the side. A wicket apiece for Zafar Gohar, Ehsan Adil, Qasim Akram and Usman Qadir. 178 looks gettable. Let's see if Central Punjab can chase this down. Ground's being used a lot. The pitch is now being used. So start of the run chase. Off the mark straight away. Central Punjab and Kamran Akmal with a single. Especially about the cities of Pakistan and the way that he can describe each and every corner there is. We're in Multan. It's not even his home city. You go to Lahore and he'll tell you everything. Catch it! For a moment it was in the air, but then he played it very straight. No chance for mid-on to get anywhere in way of that. Boundary, the first one from Central Punjab. Said many thousands. But first wicket done, so that'll cost Central Punjab not thousands, but probably 25 runs. Well, yeah, that was sort of a soft dismissal. He just went on with that shot, but didn't really put enough power behind it. Couldn't even clear that 30-yard circle. Easy catch for the fielder at mid-on, just moving a little to his right. That's first one for Asif Afridi. Have a look at that. बड़ी खूबसूरती के साथ इस बार खेला ओवर द टॉप, बड़े दिलकश अंदाज में ये शॉट एग्जीक्यूट करने में कामयाब हुए अब्दुल्ला शफीक. उनका दूसरा चौका. सही लेंथ उन्हें मिली और भरपूर फायदा उठाया. सिर्फ टाइम किया शॉट को, ज़्यादा जोर नहीं लगाया और जुनैद खान की स्पेस के साथ कोई मुश्किलात नहीं हुई. और कामरान अकमल ने खेल दिया इसे लॉन्ग ऑफ के ऊपर से. उनका बहुत बड़ा छक्का, पूरा फायदा उठा लिया उन्होंने इस फ्री हिट का. ये नवी फ्री हिट थी जो वहाब रियाज ने ऑफर की. शानदार शॉट थी, भरपूर फायदा उठाया, थोड़ा सा रूम दिया और एक तरह से बेसबॉल शॉट कहें अगर इसको तो गलत नहीं होगा, मैक्सिमम के लिए कामरान अकमल. Once again, that's the shot he goes for. One bounce to end the over. That's another boundary. Good over for Central Punjab. It is with that shot, 83 for 1. Going for the catch, and he's been given. Well, you just see that's the soft dismissal there. It was way down the leg side. He was trying to reach, get hold of it on the bat and got nothing but to the keeper, his gloves, and that's the end of Kamran Akmal. Have a look at this. After seeing the banter is on at the same time, the wicket celebration by Shoaib Malik just shows how delighted he is getting his pal Kamran Akmal out early after a boundary. As you saw last ball, just by that celebration, how much this wicket means to Shoaib Malik. Keep them in the chase. He goes big. That's how he plays. Keep them in the chase. That's a big 6. He's absolutely smoked that. Intent by Rizwan.
Second ball in his slot, and just threw his hands with positivity for a maximum. Just see, it was in his slot. He shows how positive he is. And just first ball, first runs on the board with a 6. With that, 10 more trees will be planted by Tuck and PCB. Rizwan looks ready, Sikander. Bang! Once again. It's probably even bigger. Back-to-back sixes from Rizwan. End of the over. It just races the Central Punjab to 111 for 2 after 12. इस बार एलबीडब्ल्यू की बहुत जोर से अपील की, तकरीबन एहतजाज किया आखिर में मुड़ के, और अंपायर ने देर से आउट करार दे दिया। रिजवान की इनिंग्स का खात्मा हो गया। 2 ओवर्स में 2 विकेटें मिल गई। मैच बहुत दिलचस्प हो गया। ज़्यादा गेंद को स्पिन नहीं करते, फ्लैट गेंद थी, बहुत नीचे लगी नी रोल के। सीधा मिड विकेट के हाथों में खेल दिया। इफ्तिखार अहमद ने ये कैच ले लिया और जुनैद खान को आज की शाम की पहली विकेट मिल गई। सेंट्रल पंजाब के लिए मजीद मुश्किलात। जफर गौहर से उम्मीद की जा रही थी कि कल की तरह वो शानदार इनिंग्स रिपीट करेंगे, लेकिन नाकाम रहे। पुल करना चाह रहे थे, बॉडी में बॉल आई और अच्छा कनेक्शन नहीं बना सके, और एक आसान कैच। केपी के लिए जीत जो है वो अब यकीनी होती जा रही है और सेंट्रल पंजाब की मुश्किलात में इजाफा। और इस बार हवा में और बिल्कुल तरने वाला, कोई गलती नहीं की वहाब रियाज ने। साद नसीम दोबारा नाकाम रहे, वापस इस डगआउट की तरफ लौट रहे हैं। यहाँ पर मायूसी छाई हुई है। अच्छा बॉल था, सही एक्सप्रेस पेस के साथ कराया और ऑन साइड की तरफ खेलना चाहते थे, लेकिन सिर्फ टॉप एज हुआ। इजी कैच वहाब के लिए। इस बार खेल दिया ऑफ साइड में 4 रन्स के लिए। ये अच्छा स्ट्रोक था बिलाल का। और बोल्ड कर दिया। इस बार बहुत पीछे चले गए थे, अपनी स्टंप्स को एक्सपोज किया। एक और शानदार बॉल। Usman Qadir launches this slightly fuller from Junaid, and it's been dispatched. Goes short again, top edge. Rizwan getting underneath this. Short of a length work. Junaid Khan has his man. Usman Qadir departs. And it was high on the bat. And Rizwan took it very nicely. And knocks him over. Length ball back into the stumps. Wild swing doesn't work. You can see the ball is not really coming high enough. It just kept a little bit low. Driven through the offside, and that'll reach the fence. Boundary to end the 18th. It's 147 for 9. And knocks him over. The Yorker worked, and a clinical performance from KP. Win this game comfortably. 4th win in a row. 29 runs. Iftikhar finishes the game off with a Yorker that dismisses the captain. Central Punjab once again, the same story, 149, this time 29 runs behind in a T20 game. That's a big margin. Kamran Akmal was looking good when he was opening 47 of 37, but a soft dismissal led to the downfall. Abdullah Shafiq along with him was the only partnership to be mentioned. And as you can see, post-captain Saad Naseem, they just nosedived. Having a look at the bowling in KP once again, very clinical. 2 wickets apiece for Afridi
Arshad, Junaid and Wahab, and a wicket apiece for Iftikhar and Shoaib Malik. They all put their hand up and made sure that the opposition is stopped. So overall, if we look at match 13, Khyber Pakhtunkhwa winning the toss and posting 178, riding on Fakhr Zaman 66. In reply, Central Punjab falling short. Kamran Akmal 47 to talk about, and wickets, everyone pitched in, and was a team effort from KP, winning this match by 29 runs. Hope you've enjoyed the highlights of match 13. Until next time, it's goodbye. Fakhr goes leg side, this time he's nailed it. नॉट आउट कर दिया बहुत बड़ा छक्का